हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइव। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हेलो फ्रेंड्स, मेरे लाइव पे वेलकम टू माय लाइव। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रहा हूँ ये डबल कलर स्वेटर डिज़ाइन। सो इजी, वन रो design only, and wrong side all the stitches we have to knit with pro stitches. Very easy, very easy, and very new pattern. So my friend, I hope so my all friends doing well. Good morning, good afternoon, good evening for my all the world friends. So friends, I will start now. This is our H stitch, right? So this is our pro stitch. Here upper side. So this is my starting stitch. So here we have to knit. I have to do 2 stitch to 1 stitch. 1 stitch I decreased, right? Yeah, on other side. So friend, this is our main stitch, right? This one. So this stitch we have to make 1, 2 and 3. So I made 1 stitch to 3 stitch, 1 2 3. So 2 stitch increased here, right? 1 stitch I decreased already, and now yarn our side, this stitch, this pro stitch and other stitch, this 3 stitch we have to knit together to make 1 stitch. So 2 stitch we decreased already here, right? Yarn other side, this is our main stitch, 1 2 and 3. 1 2 3. 3 stitch we have to 3 to 1, and 1 stitch to we have to make 3 stitch. So easy. So fun, ये जो डिज़ाइन है 3 स्टिच का एक स्टिच करना है और 1 स्टिच का 3, ये देखिए। One stitch to make 3 stitch, and 3 stitch to make 1 stitch with pro stitch. 1 2 3. Then this is last. So last we have to decrease 1 stitch only, because this is the border area.
So friend, from the wrong side we have to change the color, and all stitch we have to knit with the cross stitch. सारे के सारे फंदे उल्टे बनेंगे. So all the stitches we have to knit with the cross stitch from the wrong side and change the color. 2 row pattern only, so easy to do. So friends, this is our edge stitch, right? Yarn our side. So this is our border area. Border area we have to make one stitch, 2 stitch to 1 stitch with pro stitch. Okay, this is our border area. Yarn other side. This is our main stitch for the pattern. So this stitch we have to make 1, 2 and 3. 1 stitch to make 3 stitch. 1, 2, 3. 2 stitch increased, 1 stitch decreased here, right? Yarn our side. This is our main end of the pattern, pro stitch. 1 stitch and 2 stitch we have to decrease, so we have to make 3 stitch to 1 stitch. Yarn other side. This is our main stitch. 1 stitch to we have to make 1, 2 and 3 stitch. Again 1, 2, 3. With pro stitch. 1 stitch to we have to make 1, 2 and 3. 1, 2, 3. So 3 stitch to we have to make 1 stitch, and 1 stitch to we have to make 3 stitch. So easy. One, 2, 3 with pro stitch. 1, 2, 3 with net stitch. 1, 2, 3 with pro stitch. 1, 2 and 3 with net stitch. सो फ्रेंड्स 3 स्टिच का हमने करना, 1 स्टिच वो उल्टा करके. ये हमारा मेन स्टिच है. 1, 2, 3. एक फंदे के 3 करने हैं और 3 फंदे का करना है हमने 1 फंदा.
So this is our border area. So border area we have to make, we increase one stitch here, two stitch here, one stitch which decreased already here. Now one remaining here, right? So 1 and 2 we have to make decrease only one stitch like this. So friend, from the wrong side all stitches we have to knit with the pro stitch and change the color also. Hello my friend, Assalamu alaikum, and happy Ramadan Kareem, my dear. Because this is Arabic or maybe Urdu, so I can't understand, but I know you are a Muslim and this is Ramadan month, and happy Ramadan Kareem, and Allah bless you with your family, with your country, with your friends. So friends, from the wrong side all stitches with pro stitches, और हमें कलर चेंज करना है. So friend, our edge stitch here on our side, one pro stitch and one other stitch. We have to make two stitch to one stitch. So one stitch we decrease already. So this is our main stitch, the center stitch. So 1, 2 and 3. I make one stitch to three stitch, right? Here on our side, this stitch, other stitch and this upper pro stitch. We have to make 3 to 1 with pro stitch. Here on other side, this is our main stitch. 1, 2, 3. Pro stitch 1 and 2. Make 3 to 1. Again 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 to 1. One stitch to, we have to make 3 stitch. Again 1, 2, 3. One, 2 and 3. 1, 2, 3. 3 stitch to, we have to make one stitch and one stitch to 3 stitch. This is our pro stitch, right? One stitch and two stitch we have to decrease. So 3 stitch to, we have to make one stitch with pro stitch. 1, 2, 3.
1 2 3, 1 2 3 2 1, and 1 stitch to 1 2 3, 1 2 3, 3 stitch to, again we have to make 1 stitch, and this last stitch 1 2 3, and look at friends, the end of our borders area. So here we have to decrease only 1 stitch because completed already, right? This whole stitch completed. This is extra stitch. So this is extra stitch, so we have to make 2 stitch to 1 stitch only, because this is the border area, both side. I mean right side also, left side also. Okay friend. So friend, now from the wrong side we have to make all the stitches knit with the pro stitch and change the color also. If you want to make a single color is okay, this is your choice, but a single color like this type of pattern not showing the design, so that's why I decide I will use two color, not very dark also. It is your choice. If you want to make with the dark color this pattern is okay, this is your choice. So friends, by requestly, if you are new on my YouTube channel, my live, so please subscribe my channel, and I need your thumbs up, please. I need your thumbs up. You have to like my video. Thank you so much. So from the wrong side, all stitches we have to knit with pro stitch. So friend, this is H stitch, right? Here upper side, one stitch, and this two stitch. So this is the pro stitch, right? Pro stitch and this stitch we have to knit together. Two stitch to, we have to make one stitch. Here other side, this is our main stitch, pattern stitch. This one, 1 2 and 3. So we have to make one stitch to three stitch, 1 2 3 stitch. Yarn our side, we have to decrease this stitch also and other stitch also, right? This is our pro stitch. So 1 2 3, we have to make 3 stitch to 1 stitch, to 2 stitch decreased already. Yarn other side, this is our main stitch, like here. So this stitch to, we have to make 1 2 and 3. One stitch to, we have to make 3 stitch. Yarn our side, this is our pro stitch, 1 stitch, and this stitch we have to decrease 2 stitch, so we have to make 1 2 3 stitch to 1 stitch. So
2 stitch decreased already. Here we increase 2 stitch, 2 stitch increased, 2 stitch decreased. This is our center stitch. 1 2 3, this is center stitch. 1 2 3, 1 stitch 2, we have to make 3 stitch. 1 2 3 stitch to 1 stitch. Again 1 2 3, 3 stitch to 1 stitch. 1 stitch to 3 stitch we have to make. Hello friends, वेलकम टू माय लाइव। फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए। मुझे आपकी लाइक्स की बहुत ज़रूरत है माय फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स 1 2 3, 3 स्टिच का करना है, 1 स्टिच। यह ना अदर साइड, ये रहा हमारा सेंटर स्टिच। 1 2 3, सॉरी 1 स्टिच के कर दिए 3 स्टिच, और 3 स्टिच के करने हैं 1 2 3, 3 के करना है 1 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और फ्रेंड्स देखिए लास्ट में ना, लास्ट में जो बॉर्डर एरिया है ना, तो इसको तो हम नहीं करेंगे, इसको तो हम कम नहीं करेंगे है ना। तो यहाँ पे हमने 3 थे, 3 3 का 1 करा है ना, तो 1 तो हमने इधर कम कर दिया, तो ये हमारे इक्वल है। अभी ये है हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टिच है, तो इधर हमारा 2 स्टिच ही, 2 काम करेंगे 1, और 1 स्टिच हमारा कम होगा। ये देखिए then friends from the wrong side we have to change the color and all stitches we have to make with pro stitch. So friends wrong side से हमने कलर चेंज करते करते सारे के सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। ये 2 राउंड का पैटर्न है। सारे के सारे फंदे उल्टे, all the stitches we have to make with pro stitch. Sorry. Now friends, this is our H stitch. Yarn upper side,
this is our pro stitch and this pattern stitch we have to make 2 stitch to 1 stitch. Now this is the stitch, right? Center stitch. So 1 2 3, 1 stitch to I make 3 stitch, and yarn other side. This is our pro stitch, right? Take 1 stitch from this side, 1 other side. So 1 2 3, 3 stitch to we have to make 1 stitch. Yarn other side again. So this is our center stitch. 1 2 3. So 1 stitch to I make the 3 stitch. 1 2 3, 3 to 1, 1 2 3, 3 to again 1 stitch. So friends, this pattern is doing very well, very easy and very faster also. Only one row, main one row pattern. So second row, round for the wrong side or stitches pro stitches. So easy to make and very faster. आपको बहुत जल्दी बनेगा भी और बहुत इजी बनाने में. 1 2 3, 3 स्टिच का कर देना है. फिर एक स्टिच का करना है हमने 3 स्टिच. 1 2 3. सो वेरी क्लियरली जिस स्टिच का हमने एक स्टिच का 3 करना है वो है सीधा फंदा, और जिस फंदे को हमने 3 का 1 करना है वो है ये हमारे उसके सेंटर में उल्टा फंदा रखा हुआ है, इसलिए ये हमारे रह गए तीनों का 1. और ये हमारा जो सीधा फंदा है सेंटर वाला, इसके करने हैं हमें 1 के 3. सो वेरी क्लियरली सी ये फंदा है हमारा उल्टा वाला सेंटर वाला फंदा है. एक फंदा इधर से, एक फंदा उधर से, तीनों फंदों को कर देना एक फंदा धागा ऊपर. ये हमारा सीधा फंदा है. सो एक सीधे फंदे के हमने करने 1 2 3. फिर देखो ये हमारा सेंटर वाला फंदा है उल्टा. एक फंदा जहाँ से लिया, एक फंदा उधर से, तीनों फंदों को कर दिया एक, ऐसे. और फिर देखिए पूरा क्लियर नज़र आता है कि ये हमारा सेंटर वाला फंदा है, राइट. ये देखिए इस फंदे को हमने करने 3, 1 2 3, एक के 3 कर दिए. और ये देखिए जब रोंग एक हमारा pro stitch है, we have one pro stitch, one stitch from the right side, left side. This is pro stitch, so we have to make 3 stitch to 1 stitch. Very clearly see this is a center stitch, net stitch to 1 2 and 3, 1 stitch to make 3 stitch. Now friends, this is last. So if guys, this is H stitch, so here we have to make 2 stitch to 1 stitch. From the wrong side, friends, from the wrong side we have to change the color, and all stitches we have to knit with the pro stitch. सारे के सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं.
रॉन्ग साइड से, और चेंज कलर चेंज करना है। ये हमारा एच स्टिच। So friends, you see our border area, right? Here we have to stitch to make, sorry, two stitch to one stitch. This is our pro stitch, right? Pro stitch and other stitch. To make two stitch with pro stitch, is our side. This is our main stitch. For the net stitch, 1 2 3, one stitch 2, we have to make 3 stitch. This is a pro stitch, the center stitch. Okay, one this stitch, one other stitch. We have to decrease 2 stitch. So 1 2 3 stitch 2, we have to make 1 stitch with pro main stitch. 1 2 then 3. One, two, three. 1 2 3 stitch 2, we have to make 1 stitch, 1 stitch 2 3 stitch, 1 2 3. So friends, see our last H stitch, this 2 last stitch. So we have to make 1 2 stitch to 1 stitch.
Now friends, all stitches we have to knit with pro stitch and change the color also. सारे के सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं और कलर चेंज करते करते. Now friend, this is our H stitch. One pro stitch, one this pattern stitch, pro stitch and one pattern stitch to make one stitch to two stitch to one stitch. This is our main stitch, center stitch I mean. So 1 2 then 3, one stitch to I make the 3 stitch, 1 2 and 3 stitch to we have to make one stitch, one stitch to 3 stitch. This is a pro stitch, one with pro and other stitch also, to make 3 stitch to 1 stitch, 1 stitch to 3 stitch, again 3 stitch to we have to make 1 stitch, 1 stitch to 3 stitch. So friends, from the last stitch, this is H stitch, right? So we have to make 2 stitch to 1 stitch only. This is after H stitch. From the wrong side, we have to change the color, and all stitch we have to knit with pro stitch.
Hello friends, welcome to my live. So friends, if you are new on my YouTube channel, my live, so please subscribe my channel and I need your thumbs up. You have to likes my video. Thank you friend. H stitch. So फ्रेंड्स ये हमारा रॉन्ग स्टिच है ना, pro stitch, one pro stitch and one other stitch. We have to make two stitch to one stitch. Then other side. So this is our center stitch, this one. So 1 2 then 3, one stitch to, we have to make 3 stitch, 1 2 3, 3 to 1, one stitch to, we have to make 3 stitch, 1 2 3. Hello ma'am Trisha. Hello ma'am, how are you? Welcome to my live. So again 1 2 3, 3 stitch to make one stitch, one stitch to 1 2 and 3. One 2 3 stitch to, one stitch to 3 stitch. हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. 1 2 3, 3 स्टिच का हम करेंगे एक स्टिच, वो एक स्टिच के 3, 1 2 3. तो ये हमारा लास्ट है, एच है. एच में हम एक ही 2 स्टिच के एक करेंगे. ये देखिए फ्रॉम द रॉन्ग साइड. कलर चेंज करना है और सारे के सारे फंदे उल्टे. ऑल द स्टिचेस वी हैव टू knit with the pro stitch.
मैम ये वर्धमान का है बोल, वर्धमान का है। दिस इज लाइक कॉटन। ओके, सो ये जो है ये सिंपली हमारी है तो यही वर्धमान है। सो दोनों ही वर्धमान का है मैम। अब देखिए our edge stitch, yarn our side, one pro stitch and one this stitch. We have to make 2 stitch to 1 stitch. Yarn other side, this is our main stitch. 1 2 and 3, 1 stitch 2, we have to make a 3 stitch. This is our pro stitch. 1 2 3, 3 stitch 2, we have to make 1 stitch. 1 stitch to 3 stitch. 1 2 3, pro stitch, center stitch, right? 1 2 3, 3 stitch 2, we have to make 1 stitch. This is our center stitch. 1 2 then 3. 1 2 3, 1 2 3, 3 stitch to make 1 stitch. 1 stitch to 3 stitch, then 3 stitch to have to make 1 stitch. एक 2 3, 3 एक के 3 किए और 3 का कर दिया 1। मैम ये हमारा कान्हा जी का ड्रेस मैंने कल बनाया था और इसकी वीडियो अभी मेरी है उसमें लाइव में है इसका वीडियो पूरा। कान्हा का ड्रेस है और देखिए बहुत ही प्यारा है। और ये है लिपस्टिक कवर। लिपस्टिक कवर नहीं होता है जो चैपस्टिक लिपस्टिक जो होता है उसका कवर है। इसमें लिपस्टिक डाला है शायद। हाँ, लिपस्टिक कवर। ओके ओके मैम, तो कंटिन्यूसली 1 2 and 3, 1 स्टिच के 3 स्टिच और 3 स्टिच के हम करेंगे 1 स्टिच। 1 2 3, 3 स्टिच के करेंगे 1 स्टिच। 1 2 3, 3 के करेंगे हम 1 स्टिच। फिर एक सेंटर वाला स्टिच 1 2 3। सो 1 के 3। अब ये हमारा लास्ट है बॉर्डर एरिया। ये हमारे इक्वल स्टिच हो गए। अब एक्स्ट्रा स्टिच हमारा एक एक्स्ट्रा स्टिच है हियर। सो हम करेंगे 2 का 1 क्योंकि आगे बंद है ना सारा। ये हमारा नीटिंग स्टिच। मैं भी नीटिंग करती हूँ पर आप जैसे अच्छी नहीं। आप भी करेंगे मैम, ज़रूर करेंगे, मेरे से भी अच्छा हो जाएगा आपका। बस प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, लगन चाहिए। आप
को जो हासिल करना है ना ज़िंदगी में, वो आपको मिल जाता है। अब क्या बना रहे हैं? मैडम वैसे तो पैटर्न बना रहा हूँ, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि इस का ना मैं बनाऊँगा एक बेबी स्वेटर जो इनर होता है ना। सो ये वूल है, बहुत सॉफ्ट है। तो मैंने अभी डिसाइड किया कि इसका ना एक इनर स्वेटर बन सकता है बेबी का, है ना। तो बच्चे का इनर स्वेटर बना लूँगा। वैसे तो मैंने ये पैटर्न के लिए बनाया कि बस सिखाने के लिए, कि मेरे फ्रेंड्स को जो सिखाना होता है। हेलो, हेलो, ब्रिति, ब्रिति सेवास। हेलो मॉम, हाउ आर यू? सो फ्रेंड, रॉन्ग साइड से सारे के सारे फंदे हमने उल्टे बनाने होते हैं। सारे के सारे फंदे उल्टे। So from the wrong side, all stitches we have to knit with pro stitch. सारे के सारे फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। सो फ्रेंड देखिए, आप राइट साइड आगे, वहाँ पर एच स्टिच जाना आता है। सो फ्रेंड देखिए, ये हमारा उल्टा फंदा है ना। ये फंदा और ये पैटर्न वाला फंदा दोनों को करेंगे एक, जाना अदर अवर साइड। ये हमारा मेन स्टिच है, सेंटर स्टिच। ये 3 स्टिच है ना। सो दिस इज आवर मेन स्टिच। सो सेंटर स्टिच वी हैव टू मेक 1 2 3। 3 स्टिच का हम, एक स्टिच का हमने करना है 3 स्टिच। 2 स्टिच हमारे इंक्रीज हो गए। अभी तो देखिए, ये हमारा बॉर्डर एरिया, राइट, आई मीन पैटर्न का सेंटर। तो 1 2 3, 3 stitch 2 we have to make 1 stitch, 2 stitch I increased. This is the center stitch. 1 2 and 3, 3 stitch 2 I made 1 stitch to 3 stitch, 3 stitch to 1 stitch, 2 stitch increased, 2 stitch decreased already. Again 1 2 3, 1
दो, तीन। So we have to make 1 stitch to 3 stitch and 3 stitch to 1 stitch. एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। सो फ्रेंड्स जैसे लास्ट सो लास्ट में हमने एक दो स्टिच का ए करना है, एक, दो, और ये हमारा ना एच स्टिच। सो अब देखिए फ्रेंड्स, फ्रॉम द रॉन्ग साइड all stitches we have to knit with the purl stitch. सो फ्रेंड्स ये हमारा बॉर्डर एरिया है। तो बॉर्डर एरिया में एक उल्टा फंदा और एक फंदा है, दोनों का हम करेंगे एक। धागा उस तरफ, ये हमारा मेन स्टिच है सेंटर वाला। यहाँ पे 3 स्टिचेज है, 1 2 3। जो सेंटर वाला स्टिच है इसको हम करेंगे 1 2 3 स्टिच, 1 2 3, 3 का कर देंगे 1 1 2 3, 1 2 3, 3 का करेंगे 1 और 1 का करेंगे 3, 1 2 3। ये हमारा उल्टा फंदा, 1
दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन का एक, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन का एक, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन का एक, 1 2 3. So center stitch we have to make 1 stitch to 3 stitch. This is wrong stitch, right? 1 wrong stitch and other stitch to make 3 stitch to 1 stitch. One, 2 and 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3, 3 2 1, 3 2 1, 1 2 3, 3 2 1, 1 2 3. So easy to make 1 2 and 3. So friends, this is last, this is H stitch, so we have to remain the 2 stitch only. This is our pro stitch and this is our extra stitch, right? So here we have to make only 1 2 to 1, so we have to increase 1 stitch only because this is our border area, that's why. Now friend, we have to change the color and all stitch we have to knit with the pro stitch. So friend, अभी हम चेंज करेंगे कलर और सारे के सारे फंदे उल्टे बनाएंगे. सारे के सारे फंदे उल्टे. हेलो हेलो मामा, मैम आशा देवी. हाँ मैडम, मैंने गोपाल की ड्रेस बनाई है आज. कल बनाई थी मैंने, इसकी वीडियो अवेलेबल है मेरे लाइव पे. ये देखिए, अति सुंदर. सो जी मैंने फ्लावर बना के रखा है, भगवान जी के यहाँ पे लगाया था. और ये देखिए. तो ये पीछे देखिए, ये मैंने इनका एक डोरी बनाई है जो नेक को बांधने के लिए. ठीक है, ये देखिए. ये हमारा बैक साइड है बेबी का ड्रेस का, और ये फ्रंट है. जी जी.
थैंक यू मैम, थैंक यू। तो हम कहाँ पे थे? आवर एच स्टिच यार, अवर साइड। सो फ्रेंड देखिए, ये हमारा उल्टा फंदा और ये हमारा पैटर्न के 3 फंदे ना, 1 2 3। सो ये उल्टा फंदा और एक पैटर्न का फंदा, दोनों हम करेंगे, दोनों का करेंगे एक। शुरुआत में हमें दोनों का एक करना है, धागा उस तरफ। अब देखिए, ये हमारा सेंटर फंदा है, 3 फंदे थे ना यहाँ पे, 1 2 3। सो वी हैव 3 स्टिच हियर, 1 2 3। सो सेंटर स्टिच जो है एक 2 3। सो आई मेक्ड 1 स्टिच टू 3 स्टिच यार अवर साइड। ये हमारा सेंटर स्टिच है, जो प्रो स्टिच है ना, दिस इज प्रो स्टिच, 1 this side and 1 other side, and this is pro stitch. So we have to make 3 stitch to 1 stitch. Thank you ma'am, thank you. 1973. Okay ma'am, okay, I'll राधे राधे मैम, राधे राधे। सो देखिए, 1 2 3, एक फंदे का 3 कर दिए और 3 फंदे का 1 1 2 3। फिर दोबारा 1 2 3, 1 2 3, 3 का 1 1 2 3, 1 2 3, 3 का 1 1 के 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 का 1 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 का 1 और 1 के 3, 1 2 3, 3 का 1 और 1 के 3, 1 2 3। अब ये हमारे लास्ट में दो फंदे बचते हैं, 2 फंदे हैं, तो फिर 2 का हमने ए करना है, क्योंकि ये एच स्टिच है, इसके आगे तो बंद है, तो ये हमारा उल्टा फंदा है। सो जहाँ पे हम 2 का ए करेंगे, मुझे हमारा एच स्टिच। सो फ्रेंड, फ्रॉम द रॉन्ग साइड सारे के सारे फंदे उल्टे।
हाँ जी आने लगा। सो फ्रेंड्स ये हमारा स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में हमने 2 फंदे का ए करना है, एक फंदा कम होगा। ओके, फिर धागा उस तरफ, ये हमारा मेन स्टिच है। जहाँ पे 3 स्टिच थे ना वाइट वाले, ये हमारा सेंटर वाला स्टिच, 1 2 3, एक स्टिच के कर दिए 3 स्टिच। ये हमारा उल्टा फंदा, एक इधर से एक उधर से, 3 स्टिच का करना है 1 स्टिच, फिर 1 के 3, 1 2 3, 3 का करेंगे 1 1 2 3, 3 का करेंगे 1 1 2 3, 3 का करेंगे 1 1 2 3, फिर 3 का 1। हेलो हेलो, मैं सांद्रा फिक्रा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो नाउ 1 2 and 3, 3 2 1 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 2 1, 3 2 1 1 2 3, 3 2 1 1 2 3। Very easy to make this pattern. So this is idea, this is our wrong stitch, right? ये हमारा उल्टा फंदा है, उल्टा फंदा सेंटर वाला होगा, एक फंदा यहाँ से एक फंदा वहाँ से, तीनों का कर दिया 1, उल्टा करके बना देना। फिर ये हमारा सेंटर वाला फंदा जो मेन है, 1 2 3, फिर 1 2 3, 3 का 1। हेलो मैम, गुड नाइट, हाउ आर यू? Beautiful, thank you mom, thank you so much. So one stitch to me, I have to make 1 2 and 3, again 1 2 3, 3 to 1, and this is the last one, 1 2 3। ये हमारा बॉर्डर एरिया है तो उसके वजह से बंद है, राइट? तो जहाँ पे हमने 2 स्टिच का 1 स्टिच करना है, सो वी हैव टू मेक 2 स्टिच to 1 स्टिच। Starting time and ending time we have to make
2 stitch to 1 stitch, 2 stitch to 1 stitch. Between the pattern 3 stitch to 1, 3 to 1, 3 to 1, 3 to 1. Hello mom, Luzine, how are you mom? So friends, see, from the wrong side we have to change the color, and all the stitch we have to knit with pro stitch. Bye mom, bye bye. Thank you mom, thank you. Hello mom Lindas. Hello mom Linda S. How are you mom? Welcome to my live. So friends, this is our wrong side. Wrong side also very beautiful look like. Now edge stitch. So friends, this is our starting stitch. One pro stitch, one extra this stitch. We have to make 2 stitch to 1 stitch. The starting, right? This is 3 stitch. So 3 stitch to this center stitch we have to make 1, 2, 3. So 1 stitch to we have to make 3 stitch. This is our pro stitch. This is ideal stitch, right? Pro stitch and 1 stitch from the right, 1 left. We have to make 3 stitch to 1 stitch. This is our center stitch. Center stitch we have to make 1, 2 and 3. Yarn our side. This is our ideal stitch, pro stitch, 1 right stitch, 1 left stitch to make 3 stitch to 1 stitch. One, 2, 3.
So this is our last end of the round. So here we have to knit. We have to make 2 stitch to 1 stitch only, because this is the H stitch. So this is our ideal stitch, right? The pro stitch, उल्टा stitch है हमारा यहाँ पे. उल्टा स्टिच और ये स्टिच दोनों को हम कर देंगे एक. ये हमारा एच स्टिच. फ्रॉम द रॉन्ग साइड So friends, all the stitches we have to knit with the pro stitch from the wrong side. So friends, this is our ideal stitch, the wrong stitch, right? जो हमारा उल्टा फंदा है, तो जो हमारा आइडियल स्टिच है, उल्टा फंदा और ये एक्स्ट्रा फंदा, हम दो फंदे का करेंगे एक, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग है. अब देखिए, ये हमारा सेंटर स्टिच है. ये देखिए सीधे स्टिच चल रहे हैं ना. ये हमारा सेंटर स्टिच जो है 1 2 3, एक स्टिच के कर दिए 3 स्टिच. अब 1 2 3, इसमें भी देख लीजिए, ये हमारा आइडियल स्टिच है जो उल्टा स्टिच है ना. ये हमारा आइडियल स्टिच है, ये सेंटर स्टिच है. सो सेंटर में इसको रखना है. एक जहाँ से लिया राइट साइड स्टिच, लेफ्ट साइड, दोनों तीनों का कर दिया एक. ये हमारा सेंटर स्टिच 1 2 एंड 3, 1 2 3. ये हमारा सेंटर स्टिच 1 2 एंड 3. आइडियल स्टिच, राइट साइड स्टिच, लेफ्ट स्टिच, to make 1 center stitch, 1 2 3, ideal stitch, right stitch, left stitch. With pro stitch we have to make 3 to 1 center stitch, 1 2 3, ideal stitch, right left, with 3 to 1 with pro, 1 2 3, ideal stitch, right stitch, left stitch, to make 3 to 1 with pro stitch. Here on other side, center stitch, net stitch, right, 1 2 and 3. Here on our side, ideal stitch, this is wrong stitch, right stitch, left stitch. We have to make 3 to 1. 1 2
3, 1 2 3 to 1, 1 2 3, 3 stitch to 1 stitch, 1 2 3 stitch to, we have to make 1 stitch, 1 2 3। अब देखिए हमारे ये लास्ट वाले 2 फंदे हैं ना, ये हमारा आइडियल स्टिच है ना, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, ये तो हमारा एच स्टिच है जो एक्स्ट्रा स्टिच होता है। ये देखो आइडियल स्टिच तो है ही हमारा। तो अब देखिए इससे आगे है तो बंद है, जो हमारा बॉर्डर एरिया है ना, तो हमारा ये देखिए यहाँ पे हमें 2 फंदों का ए करना है। ये देखिए लास्ट में भी हमने 2 फंदे का ए किया था और स्टार्टिंग में भी 2 फंदे का ए किया था। ये हमारा जो आइडियल स्टिच है सेंटर वाला है ना, उसी के हमने 2 का ए किया था। तो जब हमने राउंड कंप्लीट किया तो उसमें भी 2 का 1 किया, और सेंटर में 1 का 3 3 का 1, 1 का 3 3 का 1, 1 का 3 3 का 1। so easy to make my friend, and look like it's very very beautiful, very chubby, very like thick pattern. So friend, time going to over for me because I have to go my regular work also. So friend, from the wrong side, all stitches we have to knit with pro stitch। सारे के सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं रॉन्ग साइड से। very easy to make this pattern. So this pattern only one row design, second row all stitches we have to knit with the pro stitch, 2 round stitch, 2 round का ये पैटर्न है। very easy, very simple and very very beautiful। सो फ्रेंड्स देखिए उल्टी साइड से हमने सारे के सारे फंदे उल्टे बनाते बनाते ये कंप्लीट करना है। ये हमारा एच स्टिच। अगेन फ्रेंड्स हमारा आइडियल स्टिच, दिस रो pro stitch, right? Pro stitch and one net stitch, we have to make 2 stitch to 1 stitch, 1 2 3 stitch, right? So this is center stitch, 1 2 3, so we made 1 stitch to 3 stitch, ideal stitch, right stitch and lift stitch। This is our
आइडियल स्टिच, प्रो स्टिच, राइट एंड लेफ्ट। 3 का करेंगे हम 1। ये हमारा नेट स्टिच है सेंटर वाला। 1 2 3, 1 2 3, 3 का 1। हेलो मैम, हेलो हेलो, हाउ आर यू मैम? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। This is our center stitch, 1 2 and 3. Ideal stitch, pro stitch, this is center stitch, right stitch, left, and this 3 stitch to have to make 1 stitch, 1 2 3. This center stitch to have to make 1 2 3, 3 to 1 and 1 2 3. So friends, this is ideal stitch, because this is the border area, no stitch there, right? H stitch. So this is our ideal stitch. Always see, look, this is our pro stitch, and then this net stitch we have to make 2 stitch to 1 stitch from the end and from the starting time, 2 stitch to 1 stitch, and here also 2 stitch to 1 stitch. So friend, from the wrong side, always knit all the stitch with pro stitch, and we have to change the color also. Hello ma'am Nusa, hello ma'am Nusa Freria, hello ma'am Nusa Freria, how are you? Welcome to my live. So friends, see all the stitches from the wrong side, pro to pro. So friends, here
our pro stitch, right? Pro and ideal stitch. This is our pro stitch, and with one net stitch we have to make 2 stitch to 1 stitch from the starting. Here now other side. So we have 1 2 3 stitch, right? So this is our center stitch. This center stitch we have to make 1 2 3 stitch to 2 stitch to 1 3 1 1 stitch to 3 stitch to, so 2 stitch I increased here, 1 stitch decreased here, and this one stitch also we have to decrease. Now yarn our side, our ideal stitch. This is pro stitch, right stitch and left stitch, and this pro stitch we have to make 3 2 1. This is our center stitch, net stitch. This net stitch too we have to make 1 2 and 3. एक स्टिच के हमने, एक फंदे के हमने कर दिए 3 फंदे। अब ये देखिए हमारा आइडियल एक फंदा है, उल्टा फंदा, ये हमारा सेंटर वाला फंदा है। राइट साइड वाला फंदा, लेफ्ट साइड वाला फंदा, और ये हमारा आइडियल फंदा उल्टा। इन तीनों को कर देंगे हम एक। फिर धागा अदर साइड, ये हमारा सेंटर स्टिच है, नेट स्टिच। 1 2 देन 3, एक स्टिच के कर दिए 3 स्टिच। ये हमारा आइडियल स्टिच है, सेंटर वाला, राइट स्टिच, लेफ्ट स्टिच, और ये हमारा सेंटर स्टिच उल्टा वाला। इनको कर देंगे 3 का 1। ये हमारा सेंटर वाला स्टिच है, सीधा वाला। इसको करेंगे हम 1 2 एंड 3। एक काम में कर दिया 3 स्टिच। हेलो मैम फमीदा, हेलो मैम फमीदा, क्या हाल है मैम? ठीक ठाक, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। फिर हम ये आइडियल स्टिच है, राइट और लेफ्ट तीनों का कर देना है हमने 1। ये हमारा सेंटर वाला स्टिच बच गया। मैं भी ठीक ठाक हूँ मैम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाओ कैसे चल रहे हैं आपके रोजे? और हैप्पी रमादान करीम, हैप्पी रमादान करीम मैम। तो एक आइडियल स्टिच एंड 2, 3 का करना है 1। ये हमारा सेंटर स्टिच, 1 2 एंड 3। हेलो मैम, हेलो हेलो रमीला, रमीला Panvik, how are you ma'am? I feel like, thank you ma'am, thank you so much ma'am, thank you so much भाई, अच्छे चल रहे हैं। ओके मैम। मैम ईद कब की आ रही है? तो ये हमारा आइडियल स्टिच है, राइट एंड लेफ्ट 3 का कर देना 1। ईद तो चांद के ऊपर होती है ना, वो तो सऊदी डिसाइड करता है, मुझे पता है सारा। सऊदी अरब से पता चलेगा कि चांद कब निकलेगा, है ना, उसी की वजह से होगा सब कुछ। सच थे, हाँ ओके मैम, ओके। चलो मुबारक हो आपका ये पूरा महीना, और अल्लाह भी आपको सबको ठीक ठाक रखे। ये मुबारक महीना आपको हमेशा खुश रखे, खुश, ढेर सारी खुशियाँ लेके आए जीवन में, पूरे वर्ल्ड में जो सबके सब ठीक ठाक रहे, हम तो यही दुआ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आइडियल फंदा 1 2 3, सबका सब ठीक रहे, पूरे वर्ल्ड में सब ठीक ठाक रहे। हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह मैया प्रभु भगवान सबको ठीक ठाक रखना। 1 2 3, एक फंदे के 3। ये हमारा आइडियल फंदा उल्टा वाला, राइट और लेफ्ट तीनों को कर देना 1। सो सिंपल, बहुत आसान है ये
पैटर्न बनाने में, और एक ही राउंड का डिज़ाइन है, एक राउंड में डिज़ाइन डालना और उल्टी साइड से उल्टे फंदे सारे के सारे। अब देखिए ये हमारा सेंटर फंदा है, ये 3 फंदे हैं ना, 1 2 3, दिस इज सेंटर फंदा, 1 मेक 1 2 and 3, 1 stitch 2 3 stitch, this is our ideal stitch, pro stitch, right left and pro to make 3 to 1। फिर एक फंदे का हम करेंगे 3 फंदे, 1 2 3, और ये लास्ट हमारा आइडियल फंदा। लास्ट में हमने वी हैव टू मेक 2 स्टिच टू 1 स्टिच। सुंदर डिज़ाइन है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये हमारा एच स्टिच। ओके फ्रेंड्स, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑल्सो देर इज 1 प्रो स्टिच, राइट। सो ये हमारा आइडियल स्टिच है, प्रो स्टिच। प्रो स्टिच, लेफ्ट स्टिच, राइट स्टिच, वी हैव टू मेक 1 stitch। There is our border area, so there is one pro stitch, and one this stitch also, we have to make 2 stitch to 1 stitch always, and end also, from the end also। So friend, from the wrong side we have to change the color, और सारे के सारे फंदे हमने बनाने हैं उल्टे। So we have to make all the stitches with pro stitch, कलर चेंज करना है और सारे के सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। सो ये डिज़ाइन जो है वो एक ही राउंड का डिज़ाइन है। तो जो रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से सारे के सारे फंदे उल्टे। तो बहुत इजी है ये डिज़ाइन, और देखने में बहुत सुंदर और बहुत फास्टर बनता है। अगेन फ्रेंड्स सेम, अब देखिए ये हमारा एच स्टिच। मैं तो रॉन्ग साइड से इसको अनबुना लेता हूँ और राइट साइड से इसको बनाता हूँ। तो ये आपकी चॉइस है, इसको बनाना है कि नहीं बनाना है। ये आप देखिए, अब देखिए धागा हमारी तरफ, ये हमारा जो रॉन्ग स्टिच है, उल्टा स्टिच, ये हमारा आइडियल है। ये हमारा सेंट्री होता है, तो लेफ्ट स्टिच लेना है हमने, और ये इसको दोनों को कर देना हमने एक। ओके, ये हमारे 3 स्टिच वाला सेंटर वाला स्टिच है, नेट स्टिच। सो वी हैव टू मेक 1 स्टिच टू 3 स्टिच, 1 2 3। आइडियल स्टिच, रॉन्ग स्टिच, आई मीन प्रो स्टिच, राइट लेफ्ट एंड प्रो स्टिच। नेट स्टिच 1 2 3। एक स्टिच के हमने करने 3 स्टिच, और 3 स्टिच के करने हमने एक स्टिच। एक 2 3। आइडियल स्टिच, रॉन्ग स्टिच, राइट लेफ्ट एंड दिस प्रो स्टिच to make 3 stitch to 1 stitch।
the center stitch, 1 2 3. So this is our last stitch, ideal stitch. So friend, from the wrong side सारे के सारे फंदे उल्टे, so from the wrong side all the stitches we have to knit with the pro stitch. सारे के सारे फंदे उल्टे बनेंगे. सो फ्रेंड, ये हमारा आइडियल स्टिच है. जो उल्टा स्टिच है ये हमारा आइडियल स्टिच है. उल्टा स्टिच और एक हमारा सीधा स्टिच, दोनों को करेंगे एक. स्टार्टिंग में हमारा एक स्टिच कम होता है. धागा हमारा पीछे गया. ये 3 स्टिच है ना, 1 2 3 स्टिच है, और ये हमारा सेंटर वाला स्टिच. इसको हम बनाएंगे 1 2 3. एक का 3 कर दिया. धागा हमारी तरफ, 1 2 3. ये हमारा आइडियल स्टिच है जो है उल्टा फंदा जो है, राइट स्टिच और लेफ्ट स्टिच, और ये हमारा उल्टा फंदा. इन तीनों का करेंगे हम एक. ये हमारा सेंटर वाला फंदा है. 3 फंदे ना यहाँ पे. सेंटर वाले फंदे का 1 2
तीन, फिर इन तीन का हम करेंगे एक फंदे के हम करेंगे तीन, 1 2 3। So from the end of this round, ये हमारा आइडियल स्टिच है, सीधा फंदा और उल्टा फंदा, जहाँ पे हम दो फंदे को एक करेंगे। So again friend, from the wrong side, कलर चेंज करना, ये सारे के सारे फंदे उल्टे बनेंगे। All the stitch we have to knit with the pro stitch. So again friend, edge stitch, wrong stitch and right stitch, ये हमारा आइडियल स्टिच है। रॉन्ग स्टिच एंड आई मीन प्रो स्टिच, नेट स्टिच, एक फंदा उल्टा है एक फंदा सीधा है, दोनों को हम करेंगे एक। ये हमारा रहा सेंटर स्टिच, तीन फंदे ना, 1 2 3, ये सेंटर वाला फंदा जो है 1 2 3, एक के कर देने तीन फंदे, धागा हमारी तरफ। ये हमारा आइडियल स्टिच है, जो उल्टा फंदा है ना, राइट फंदा और लेफ्ट फंदा और ये सेंटर वाला फंदा, इनको हम कर देंगे तीनों का एक। फिर ये हमारा सेंटर वाला फंदा, 1 2 3, एक फंदे के कर दिए तीन फंदे, फिर 1 2 3, तीन का कर दिया एक, एक दो तीन,
1 2 3, फिर 3 का कर दिया 1, फिर 1 फंदे 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर 3 का 1 2 3, 3 फंदे का 1 फंदा, फिर दोबारा 1 2 3, 1 2 3, 3 फंदे का 1 फंदा, 1 2 3, 1 फंदे का 3 फंदा और 3 फंदे का 1, तो लास्ट में हमारे पास 2 फंदे हैं। ये हमारा आइडियल फंदा जो है ना, उल्टा आइडियल फंदा और ये सीधा फंदा, दोनों का 1। So friends, sorry to say because now I have to go right now. So friends, मिलते हैं फिर tomorrow morning 7 to 9. Okay friends, so bye bye, take care, God bless for everybody. Hello mom Sanjana, wait. Okay मैम, okay, कैसे हो मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नहीं, और सुनाओ मैडम। मैं आपकी लाइव देखता रहता था, एक्चुअली मैं था आउट ऑफ सिटी, तो देखा होगा 5 दिन से मैं एब्सेंट हूँ, मेरी एब्सेंट लगी है इधर। मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बिल्कुल ठीक है माम, बिल्कुल ठीक ठाक। तो मैं दिल्ली गया था कुछ काम के लिए, तो फिर वहाँ पे 4-5 दिन में मुझे रहना था, कोई काम था। फिर कल आया था, कल सुबह आया था वापस। फिर कल भी मैं 2 टाइम लाइव बैठा, फिर अभी सुबह फिर दोबारा लाइव आया हूँ। मैम और सुनाइए, सब फैमिली कैसी है, आप कैसे हो, कैसे है आपकी लाइफ? तो अच्छी चल रही है, आपका चैनल तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया चल रहा है। तो हमेशा आप तरक्की करें। इट इज़ ओके प्रीतम जी, काम भी ज़रूरी है। जी काम भी ज़रूरी है, तो ये तुम्हारा साइड है ना जी, तो काम तो ज़रूरी है ना। काम, रिश्तेदारियाँ, आना जाना वो तो चलता रहेगा। और सुनाइए जी आप। तो फिर चलो वो थोड़ा बना भी दिखा देता हूँ, साथ साथ बनाता भी, थोड़ा सा साथ बात भी हो जाएगी। सो फ्रेंड, रॉन्ग साइड से सारे के सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं और कलर भी चेंज करना है। कलर चेंज करते करते हमने सारे के सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। हाँ जी, वो बोल ही रही हैं कि उनको पूछो, उनको मेरी नमस्ते बोल दो। तो वो साथ ही मेरा किचन है और वो खाना बना रही हैं, तो वो भी आपको आपको नमस्ते कह रही है मैम। जी। तो फ्रॉम द रॉन्ग साइड सारे के सारे फंदे उल्टे।
हाँ हाँ, रमज़ान चल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। और भगवान सब ठीक ठाक रखे। और पूरे वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम चल रही हैं वो सब ठीक ठाक हो जाए। इसे रमज़ान के पहले पहले, ईद से पहले सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। हम तो यही बोलते हैं कि जो इस साल की जो ईद है वो सबको खुशियाँ भर के खुशियाँ लेके आए, और ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वे सब ठीक हो जाएं, है ना जी। तो रमज़ान में तो ड्यूटी आवर्स भी कम होते हैं ना, 6 आवर ड्यूटीज़ होती है ना। ग्रीन वाला दिखाना। हाँ जी मैम, मैं दिखाता हूँ। ये मैंने कल बनाया था गोपाला का ड्रेस। तो ये डिफरेंट है बिल्कुल। इसकी लाइव वीडियो तो आप देख सकते हो, देख लेना। कल मैंने बनाई थी, लाइव में है इसका पूरा का पूरा कैसे बनाना है इसको। ये 0 नंबर का है। सो मैम देखिए, ये एक्स्ट्रा एक बनाया मैंने, देखिए पीछे से ना ये एक तनी सी बनाई है मैंने, ये देखिए। सो इसको आप टाइटली पहना कर इसको बंद कर सकते हैं। ये बैक साइड है, और ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट में मैंने इससे फ्लावर बनाया था, थोड़ा फ्लावर लगा दिया था, ये देखिए। और ये बहुत जल्दी बनता है। मैंने कल तो लाइव में बनाया था। एक दिन मैं पहले दिल्ली में भी मैंने थोड़ा नीटिंग करी थी बैठ के ना। दिल्ली में बैठ के मैंने 2 4 वीडियो डाली हैं, आपने देखा होगा। जो फ्लावर वाली है वीडियो, वो वाली। फिर मैंने पोट शोट बना के ना, जहाँ पे मैं रुका था वहाँ पे मैंने गिफ्ट करे थे सारे पोट वाले फ्लावर्स। ये मैंने वहाँ सबको सब वहाँ गिफ्ट करे। जिनके घर में मैं ठहरा था उनके घर में मैंने कृष्णा की 2 3 ड्रेस बना के दी। फिर जिन जो मेरे वहाँ पे रिलेटिव्स हैं उनको दिया, फिर उनके फ्रेंड्स को, सबको मैंने गिफ्ट करके ये कृष्णा के 3 4 बनाए थे मैंने ड्रेसेस। तो मैंने कहा चलो कुछ याद करेगा ना। जहाँ पे भी जाओ आप अपनी यादें छोड़ो, और यही यही ज़रूरी है ना लाइफ में। तो बाकी भगवान ने आपको क्रिएटिविटी दी है तो उसका फ़ायदा होना ही चाहिए सबको ही। तो ये हमारा एच फंदा। सो ये हमारा आइडियल फंदा है। सो एक फंदा हमारा उल्टा और ये सीधा फंदा। 2 फंदों के हम करेंगे एक फंदा। एक फंदा हमने कम कर दिया। ये है 3 फंदे है ना। तो 3 फंदे का जो सेंटर वाला फंदा है इसके हम बनाएंगे 1 2 3। एक फंदे के हमने 3 हाँ हाँ, गिफ्ट लेकर सबको अच्छा लगा होगा। बिल्कुल माँ बड़े खुश हो रहे थे तो ये हमारा आइडियल फंदा है, राइट और लेफ्ट फंदा। 3 फंदे का हम करेंगे एक फंदा। फिर 1 2 3। एक फंदे के कर दिए 3। आइडियल फंदा उल्टा, राइट और लेफ्ट, तीनों को कर दिया 1। ब्रेकफास्ट कर नहीं लिया, अब ब्रेकफास्ट बन रहा है 9 बज गए, बस मैं उठने वाला हूँ। फिर मुझे अपना जॉब पर भी जाना है, क्लिनिक पे भी जाना पड़ेगा। सो 1 2 3, 1 2 3, 3 का 1 और एक फंदे के 3, 1 2 3। ओके मैम, बाय बाय, टेक केयर। फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 का करना 1, फिर 1 2 3। हाँ बिल्कुल मैम, बाद में बात करते हैं।
हेल्थ ज़रूरी है, बिल्कुल मैम, बिल्कुल हेल्थ ही तो ज़रूरी है। एक, दो, तीन, तीन का एक, एक के तीन, एक, दो, तीन। तो ये हमारा बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया में ये देखो आइडियल फंदा है, एक और दो, दोनों का एक। So okay friends, bye bye, see you again tomorrow 7 to 9. So bye bye, take care.